Hello folks, so in this video we will be specifically talking about financial relation. As you can see on your screen, it basically consists of part 12, article 268 to 293. Okay, so moving ahead, under this financial relation we will be specifically talking about these 9 topics. First is allocation, and under allocation we'll be talking about distinct subjects, and then distinction between levy, collection and appropriation, and then restriction on states by constitution. Okay, and then we'll be seeing the distinct distribution of tax revenues, that is article 268 to 271, and then we'll be seeing distribution of non-tax revenues between center and states, and then grants and aid, and then we'll be talking little bit about finance commission, and then we'll be seeing protection of state interest, and then we'll be talking about the provisions that are made or laid down by borrowing by center and states, and intergovernmental tax immunities, and then effects of emergencies. Intergovernmental tax immunities में basically हम यही देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेट की प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको सेंटर टैक्स नहीं करता है, और कौन सी ऐसी सेंटर की प्रॉपर्टी होती है या इनकम होती है जिसको स्टेट टैक्स नहीं करता है, और इमरजेंसी के दौरान क्या प्रोविज़न होते हैं हम वो भी देखेंगे. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट एलोकेशन. ओके, हाउ the taxes are allocated. As you all know that article 268 to 293 in part 12 of the constitution deal with center state financial relation. Besides these, there are other provisions dealing with the same subject. These together can be studied under these heads, the above heads that we have already discussed. तो allocation के अंदर हम ये देखेंगे कि basically हमारे constitution में 3 लिस्ट होती हैं. तो हम सभी को पता है कि सेंटर स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. तो जो यूनियन लिस्ट होती है या सेंटर लिस्ट होती है, यू कैन से, तो उस पर पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली में सेंटर एक्सक्लूसिवली लेवी करता है टैक्स, और यूनियन लिस्ट में केवल 15 आइटम्स ऐसे हैं जिनको पार्लियामेंट या सेंटर टैक्स करता है या लेवी करता है या टैक्स लेवी करता है. और ऐसी स्टेट एक्सक्लूसिवली लेवी टैक्सेस ऑन स्टेट लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 20 such items, and concurrent list that is levied by both of them, and there are mainly 3 items or something like that. So I guess there is not 3 items, and these 3 items are in residuary taxes. Just ignore this part, this 3 items things. Okay, so just ignore it. Okay, and residuary taxes के अंदर 3 items ऐसे आते हैं. residuary taxes जो बच जाते हैं items जिनको नहीं कोई टैक्स कर रहा है, तो उसको पार्लियामेंट यानी कि सेंटर ही टैक्स करेगा. और अभी हाल फिलहाल गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स रेसिडुअरी टैक्सेस में आते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन लेवी, कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन के बीच में भी कुछ टैक्सेस में डिस्टिंक्शन बनाता है. फॉर एग्जांपल यू कैन से इनकम टैक्स, कि उसको सेंटर लेवी करता है लेकिन सेंटर लेवी करता है और कलेक्ट करता है, लेकिन अप्रोप्रिएट स्टेट करता है. द इनकम टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, बट इट्स प्रोसीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, ओके, वो हम देखेंगे. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन. तो स्टेट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो बेसिकली 4 रिस्ट्रिक्शन हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर प्रोफेशन पे और ट्रेड पे, कॉलिंग पे, एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगा सकता है, लेकिन जो टोटल अमाउंट पेबल होगा स्टेट को बाय एनी पर्सन पर एनम वो 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, हर साल में हर बंदे के ऊपर 2500 से ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. ओके, सो दिस इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट्स. एंड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन. सेकेंड रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर किसी गुड के सेल या परचेज पे टैक्स लगा सकता है, लेकिन उसमें भी 4
रिस्ट्रिक्शन है कि वो कोई भी जो गुड को मतलब किसी भी सामान को बेचा या खरीदा जा रहा है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के बाहर नहीं होना चाहिए, और अगर उस गुड या उस गुड्स का, उस सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है तब भी स्टेट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो दिस इज दिस वे। एंड अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर पार्लियामेंट बोलता है कि ये गुड स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है और इस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, ऐसा प्रोविजन पार्लियामेंट बनाता है, तो वो स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। और इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, ये 4 रिस्ट्रिक्शन थे सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स पे अदर देन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अलावा कोई भी गुड ये टैक्स कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को नहीं टैक्स कर सकते, न्यूज़पेपर इज नॉन टैक्सेबल। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन पे टैक्स लगा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेंटर को बेची या सेंटर द्वारा कंज्यूम की जा रही, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और ऑपरेशन, CMO यानी कि कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, रेलवे कंज्यूम करिए वो इलेक्ट्रिसिटी इन 3 कामों के लिए, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए, तो नहीं लगेगा उस पर टैक्स। ओके, वो स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। और ऐसी ही कंपनी जैसे कोई है जो रेलवे की, वो ये कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस या ऑपरेशन पे रेलवे के वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। ऐसे ही अगर स्टेट लेजिस्लेचर वाटर इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज पे टैक्स लगा रही है, तो वो किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो कि ऐसी अथॉरिटी है इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली से रिलेटेड कोई काम कर रही है, तो उस पर टैक्स लगा तो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन चाहिए होगा और प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज़ थी हमारी जो 4 मेन रिस्ट्रिक्शंस थे उसके ऊपर स्टेट के टैक्स लगाने पे, तो वो हमने देख लिए। अब हम देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू में बेसिकली हम 2 पहले चीज़ें देख लेते हैं, 80th अमेंडमेंट एक्ट और 88th अमेंडमेंट एक्ट। 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत क्या हुआ था कि 10th फाइनेंस कमीशन आया था, उन्होंने कहा था कि जितना भी स्टेट सेंटर की जो इनकम आती है उसका 29% जाना चाहिए आपको स्टेट्स को। ओके, relates to revenue sharing between the center and states, whereby states overall share was increased to 29% as per the 10th finance commission's recommendation. Okay, so now 10th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा कहा था कि टोटल इनकम ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज 29% शुड गो टू द स्टेट, और इस स्कीम को बोला गया ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आया फ्रॉम अप्रैल 1996। रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स कि वो जब ये लॉ बन गया तो उसके पहले के टाइम से ही वो मतलब उस पर इम्पोज किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ थी हमने देखा अलोकेशन में। और 88th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एक नया टैक्स इजाद किया गया जिसको सर्विस टैक्स बोला गया, और आर्टिकल 268A जो है, पार्डन मी, आर्टिकल 268 आया इसमें आपका आर्टिकल 268 उस मतलब उसमें उसको सर्विस टैक्स बोला गया, और ये 92C के अंदर मतलब ये आया, और लेवी ये सेंटर द्वारा लेवी किया जाएगा, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट सेंटर और स्टेट दोनों द्वारा किया जाएगा। तो इट मेक्स माइनर अमेंडमेंट इन आर्टिकल 268, 269, 270 एंड इन 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन लिस्ट 1 Union list. After entry 92B, the following entry shall be inserted, namely 92C, tax on services. Okay, so ये आपका आर्टिकल 268 है जिसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 268 is the tax levied by center but collected and appropriated by states. Okay,
Excuse me for a moment. यहाँ पर ये मुझसे गलती हो गई है. लेविड बाय सेंटर एंड collected and appropriated by states only होगा. Okay, so pardon me for this. Okay. Oh God. So here we were. This is not both center and state, just ignore it, and this is only states, so I'm cutting it. Okay, so just cut it. By states only, so it will be levied by center and collected and appropriated by states only. Oh, sorry. It was right. It is collected and appropriated by both center and state. Okay, so it is collected by both center and it is levied by center and collected and appropriated by both center and state. I got confused between 268 and 268A. That I was talking about ki only states, and it was about another. Okay. So collected and appropriated by states, that is about 268, and that is different, and this is 88th Amendment Act is about 268A. Okay, so if you're getting confused, just to check it once. Okay, and I'm right here. So moving ahead, collected and appropriated by both center and state, this is article 268A. Okay, so this makes minor amendment in these articles and in 7th schedule to the constitution, and this adds this. And now moving ahead, talking about article 268. 268 is different, and 268 is levied by center but collected and appropriated by states. So it basically consists of two duties. One is stamp duty and excise and another is excise duty on medicinal and toilet preparations. Okay, so stamp duty on bills of exchange, policies of insurance, transfer of bills of exchange, policies of insurance, transfer of shares, checks, promissory notes, and others. Okay, so now excise duty on medicinal and toilet preparation containing alcohol, narcotics. The proceeds of these duties levied within any state do not form a part of Consolidated Fund of India, but are assigned to that state. That's what we have to remember, that this whole proceed of these duties levied within the state and do not form a part of Consolidated Fund of India, but are assigned to the state. And an excise what is excise duty? Basically, some of you might not be familiar with excise duty. So excise duty is just opposite of custom duty. What does that mean? That mean कि custom duty में क्या होता है कि export import होता है, तो like कस्टम ड्यूटी पे इम्पोर्ट पे टैक्स लगता है, तो मतलब अ गुड मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड आवर कंट्री, एंड एक्साइज ड्यूटी इज समथिंग दैट गुड मैन्युफैक्चर्ड विद इन आवर कंट्री. ओके, सो दैट्स हाउ एक्साइज ड्यूटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी. सो नाउ मूविंग अहेड, talking about article 268A, that's what we were talking in Amendment Act. Article 268A, levied by center but collected and appropriated by center and states. If you're confused between these things, I have made a table that I'll be discussing in the end of these articles so that you will be able to recall these things whenever necessary. So you can see here
it is levied by center and collected and appropriated by both the center and state, and this tax is basically called service tax. And taxes on a service are levied by center, but their proceeds are collected and appropriated by both the center and the states. The principle of their collection and appropriation are formulated by parliament. The principle are laid down by parliament. So now moving ahead and talking about article 269. Article 269 is about taxes levied and collected by center and but assigned to states. Okay, so this is about sales and purchase of goods in course of interstate trade and commerce, taxes on consignment of goods in course of interstate trade and commerce, and the net proceeds on these taxes don't form a consolidated part of consolidated fund of India, and they are assigned to concerned states in accordance with principle laid down by parliament. As simple as the previous one, as happened in stamp duty and excise duty. Okay, so this is also not a part of consolidated fund of India, and the principle on which these taxes are levied and collected are laid down by parliament. Okay, so this is levied and collected by center and assigned to states. Okay, now moving ahead and talking about article 270. It is all about levied and collected by center but distributed between both center and states. Okay, including all, it includes, like, it is basically called net proceeds. Okay, what is meant by net proceed? Net proceed मतलब जितना proceed इकट्ठा हुआ है सेंटर द्वारा उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये फाइनेंस कमीशन इसका प्रिंसिपल लेट डाउन करता है, मतलब रिकमेंड करता है, तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट लेट डाउन करते हैं इसका जो प्रिंसिपल होता है. तो इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड टू इन यूनियन लिस्ट. सारे यूनियन लिस्ट के आइटम्स होते हैं एक्सेप्ट दोज वी हैव डिस्कस्ड एंड दोज वी आर अबाउट टू डिस्कस. एक जो सरचार्ज होता है उसको सरचार्ज, सेस और जितने 268, 268A और 269 में डिस्कस किए हैं इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो यूनियन लिस्ट में बचता है वो आर्टिकल 270 में आता है, और वो कलेक्ट लेवी और कलेक्ट सेंटर करता है, लेकिन अप्रोप्रिएट उसको सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट दोनों के बीच में कर दिया जाता है. सो आई विल बी making it more easy by that table so that you may be able to recall whenever you are required to. So don't worry about it if you're not able to reconnect all these lines. Okay, so just moving ahead. So as I told you, the manner of distribution of net proceeds of these taxes and duties is prescribed by the president on recommendation of finance commission. Okay, so now article 271, this is exclusively by center. Everything is by center. Surcharge on certain taxes and duties for purpose of center. Parliament at any time levy the surcharges on tax and duties referred to article 269 and 270. Surcharge is basically tax on tax, and the proceeds of such surcharges go to center exclusively. In other words, the state have no share in these surcharges. Okay, now tax exclusively levied, collected and retained by states. These belongs to states exclusively, and these are the items in a state list. There are basically 20 such items, and some of are mentioned here. Land revenue, agricultural income, succession and estates duties in respect of agricultural land, taxes on land, buildings, mineral rights, animal and boats on road vehicles, luxuries, entertainment, gambling, excise duty on alcoholic liquors for human consumption and narcotics. Okay, moving ahead. Taxes in entry of goods into a local area, on advertisement, except newspapers, on consumption of sales of electricity on goods and passenger carried by road or inland waterway, taxes in profession, trade, callings and employment less than 2500 per annum, tolls, stamp duty on documents except in union list, capitation tax, sales tax other than newspaper fee on matters enumerated in a state list except court fee. Okay, so these are the items in a state list, and as I told you that for making it easier for you to remember everything, I've made this table. As you can see here, article 268, that is about stamp duty, excise and medicinal and excise on medicinal and toiletry preparation. So you can see that every tax is levied by center except that is in a state list. वो मैंने इस टेबल में मेंशन नहीं किया है because वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, because that was exclusively by center. Okay, so we can say surcharge is all about center only, levied by center,
collected by center, appropriated by center. So article 271 is done for you. Okay, now all the that are left, we will see all those. ठीक है, आर्टिकल 268, 268A, 269 और 270. तो उसमें levied by में सब में center आएगा. ठीक है, अब you can see कि stamp duty and excise duty, that is article 268, is collected and appropriated by states, and this article 268A, service tax, is collected by and appropriated by both center and states. Okay, and article 269 is collected by center but appropriated by states, and levied में तो हमेशा सेंटर ही है. ओके, तो आर्टिकल 270 जो कि नेट प्रोसीड्स जिसको कहते हैं फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करे, तो ऑब्वियसली वो लेवीड और कलेक्टेड बाय सेंटर है, और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर टैक्स है. ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में था तो कलेक्टेड बाय भी सेंटर ही होगा. ठीक है, तो appropriated in between center and states. So okay, so this way you can recall the table and then you can easily write it the way you are supposed to. And one more trick I'll tell you, that in every, the first column it will be easy to remember center, state, state, and last column center, center, center. Okay, and in every column it is levied by in center, levied by there will be center, and you can see in second column only there is center and state, center and state, and rest these column will be left. Okay, let me check. Yeah, this one will be left, then here will be center, state, and then center, states, and center. Okay, so this way you can easily recall and you can figure out any other way to remember this. Okay, now moving ahead, distribution of non-tax revenue. There will be distribution of non-tax revenue and grants and aid to study and that emergency provision. So we will be dealing that with these left topics in next video lesson. So till then, stay tuned and subscribe my channel and comment if you like the video. So thank you so much.